Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with squamous cell carcinoma of maxillary sinus और we have seen कि generally वो unnoticed होता है जब तक उसके symptoms प्रोड्यूस होना स्टार्ट नहीं होते. और सिम्टम्स क्या क्या थे? मेनली साइंस एंड सिम्टम्स थे हमारा नेजल स्टफिनेस, swelling over the cheek, pain in the area, chronic sinusitis एंड थोड़े बहुत ocular symptoms. उसके बाद 5 to 10% केसेस में पैरासीशिया होता है, जनरली मास बल्जिंग होता है ओरल कैविटी में, और ये सब देखे थे मोबिलिटी एसोसिएटेड होते हैं और सीटी स्कैन ज़रूरी होता है. ठीक है, दैट्स वी हैव सीन अबाउट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिलरी साइनस. विल बी कंटिन्यूइंग दैट टुडे. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिफरेंशियल डायग्नोसिस: adenoid cystic carcinoma of salivary gland, mucoepidermoid carcinoma, lymphoepithelioma, chronic sinusitis, mucormycosis, sarcoidosis, and sarcomas of bone. So these all are the differential diagnosis for squamous cell carcinoma of maxillary sinus. Now coming to diagnostic workup, CT and MRI scan is must for maxillary sinus carcinoma. Then जो हम लोग रूटीन ओरल एंड हेड एंड नेक एग्जामिनेशन करते हैं लैरिंगोफैरिंग्स का. देन इंसिशनल बायोप्सी थ्रू अ कार्डवेल लुक अप्रोच टू एंट्रम. TNM classification but for sinus tumor it is different. So TNM classification for sinus tumor is different from all other oral cavity carcinomas. In this TNM classification, scans are required to assess the disease extent और फिर उस हिसाब से staging होती है according to scans. Okay, now coming to the treatment part, requires aggressive hemimaxillectomy or maxillectomy surgery through a Weber Ferguson type of incision. सो इट रिक्वायर्स एग्रेसिव, क्योंकि सब जगह वो चले जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं मैक्सिला से, वो साइनस से फिर पीछे पोस्टीरियर, तो इट रिक्वायर्स एग्रेसिव हेमीमैक्सिलेक्टोमी और मैक्सिलेक्टोमी. Rarely, it may also require a lower lip split incision and a midline mandibulotomy to retract the mandible laterally to gain access to the pterygomaxillary and infratemporal spaces. अगर infratemporally और pterygomaxillary spaces तक चले गए हैं तो it also require lower lip split incision and a midline mandibulotomy. Okay, for the access thing. Now the neck should be treated concomitantly either by surgery or radiation. A functional neck dissection for N0 or N1 neck and a modified radical neck dissection for N2 or N3 neck is required. Okay. Now, combination surgery and chemotherapy radiation protocols improve tumor control and prognosis. So, हम लोग सर्जरी किए, रेडियोथेरेपी किए और फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी भी करते हैं अलॉन्ग विथ कीमोथेरेपी, ताकि ट्यूमर कंट्रोल और प्रोग्नोसिस थोड़ा सा इम्प्रूव हो. ऑब्चुरेटर प्रोस्थेसिस फॉर द रिजल्टेंट डिफेक्ट, और जैसे पैलेट में हम लोग देखते थे प्रोस्थेसिस, फिर ऑब्चुरेटर ताकि वो नेज़ल रिगर्गिटेशन ये सब ना हो, स्पीच इम्पेयरमेंट जो भी है उसके लिए सेम चीज़ हम लोग इधर करते हैं, हम लोग ऑब्चुरेटर प्रोस्थेसिस देते हैं. Now coming to prognosis and follow-up, prognosis is very poor for maxillary sinus tumor. Overall, adjusted 5-year survival rates are between 15% to 25%. It's very low. Okay, follow-up is same. It requires direct examination and a mirror or fiber optic examination of the laryngopharynx every 4 months for 2 years and then every 6 months. तो पहले 2 साल के लिए 4 months पे, फिर every 6 months. Now, a CT or MRI scan is also valuable at yearly intervals over the first 2 years. तो ये सब के साथ हमको CT और MRI स्कैन भी चाहिए होता है फॉर मैक्सिलरी साइनस ट्यूमर. At
yearly intervals over the first 2 years tak. Okay, that's all about maxillary sinus tumor. We'll be starting different one in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.